Question in Hindi. And the main questions are what, who, when, where, why. Okay. So in Hindi, what and question marker is kya. Kya meaning what and kya meaning question marker too. Like you say, are you? Do you have a pen? Are you going to a mall? So these are all question marker. So instead of using are you, do you, we use kya. And this is the thing that comes first. So kya meaning what and question marker, and kaun, who, kab, when, kahan, where. So now you can see that in English, question word starts with W, but in Hindi it starts with ka, like half ka or full ka. Let's see some examples in Hindi. So our first one is kya. Kya as what? I will say wahan kya hai. Wahan kya hai? Wahan meaning there. What is? Okay. So what is there? Wahan kya hai? What is there? Your answer will be wahan. Whatever is there, you will write here. For example, you can say wahan kitab hai. You cannot use people here because it's kya, not kaun. Okay. Next one is question marker as kya, and this comes the first thing in the sentence always. So this will be yes and no questions, like you will say हाँ or नहीं. For example, क्या आप अमेरिकन हैं? क्या आप अमेरिकन हैं? So, are you an American? So you will say no, I am not, or yes, I am. So क्या आप अमेरिकन हैं? One more example. क्या वो किताब है? क्या वो किताब है? Is that a book? You can say yes, or you can say no. That is a dictionary, not a book. Next one is कौन. कौन. So कौन, question words usually come after the subject. So वो कौन है? वो कौन है? वो, whoever is that person, you can say वो सुनीता है. Okay. If you want to say who is your brother, आपका भाई
योर ब्रदर, आपका भाई कौन है? मेरा भाई वो है. If you are indicating a person, you can say मेरा भाई वो है. So, कौन comes after the subject. Okay? आपका भाई कौन है? वो कौन है? ठीक है. Next is कब, when. When is Holi? होली कब है? होली कब है? होली मार्च में है. और आप कब सोते हैं? When do you sleep? So that is how we make a question sentence with कब. होली कब है? आप कब सोते हैं? Next one is कहाँ. कहाँ meaning where, and the first question people ask you, आप कहाँ से हैं? से meaning from, कहाँ where, आप you, हैं are. Where are you from? So you say आप कहाँ से हैं? Where are you from? Where is your sister? आपकी बहन कहाँ है? Where is your sister? Okay. So क्यों? So I'm making one example, but people usually say क्यों, why, क्यों, just क्यों. But if you are like making a sentence, then you will say आप क्यों late आए? Why did you come late? आप क्यों समोसा खाते हैं? Why do you eat samosa? Because I like it. Some more example with all the question words that we did. क्या आपका भाई है? Do you have a brother? क्या आपका भाई है? And your answer will be हाँ, मेरा एक भाई है. And if it's no, then नहीं, मेरा भाई नहीं है. What? क्या मैं What? क्या
What? भारत में क्या है? What is in India? भारत में ताजमहल है. Okay. Next one is who? ये लड़का कौन है? ये लड़का मेरा दोस्त है. When? आप कब घर जाते हैं? मैं 10 बजे घर जाता हूँ. आप कहाँ से हैं? Where are you from? मैं दिल्ली से हूँ. I'm from Delhi. आप अखबार क्यों पढ़ते हैं? Why do you read newspaper? मैं अखबार पढ़ता हूँ क्योंकि मैं दुनिया के बारे में जानना चाहता हूँ. के बारे में मीनिंग अबाउट, जानना चाहता हूँ. I want to know about the world. मैं अखबार पढ़ता हूँ क्योंकि मैं दुनिया के बारे में जानना चाहता हूँ. Okay. Here are some examples from the newspaper. पीएम मोदी के कपड़ों का खर्च कौन उठाता है? जाने. कौन है मथुरा में गायें पालने वाली ये जर्मन महिला? If you have any question, you can write to me. I will be happy to answer your questions. Thank you.